Hello everyone. So this is the first video to the Python bootcamp course, right? तो इसमें हम लोग Python इंस्टॉल करेंगे अपने PC पे, ओके? फिर हम लोग IDLE से इंट्रोड्यूस होंगे, ओके? So how the IDLE is used and what all things can we do onto the IDLE. Then हम लोग अपना first Python प्रोग्राम लिखेंगे, right? So first of all, let's install Python. So head over to the Chrome or whichever browser you use, then type python.org. Okay, so this is the official website of Python. इस वेबसाइट पे जाओ, then download section में जाके then whatever you have, Windows, Mac और Linux, सारे versions के लिए अवेलेबल, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है Python. तो डाउनलोड द वर्जन, ओके. सो अगर सपोज तुम्हारे पीसी पे ये वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है, देन यू कैन गो टू द व्यू फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स और तुम कोई पुराना वर्जन डाउनलोड कर लो, ओके. तो वो सपोर्ट कर जाएगा, बट जस्ट मेक श्योर दैट तुम्हारा वर्जन 3 से ऊपर हो, ओके. सो योर पाइथन वर्जन शुड बी ग्रेटर दैन 3. उसके बाद तुम कोई सा भी वर्जन डाउनलोड कर लो, इट विल बी फाइन. जस्ट मेक श्योर इट इज़ मोर दैन 3, 2 नहीं होना चाहिए, ओके. एंड वंस इट इज़ डाउनलोडेड, then you will get a folder here like python 3.6. so in this folder you have this IDLE जो हम लोग यूज़ करेंगे, and you have this python 3.6. ये basically command line है, okay. so this looks something like this, okay. so हम लोग जो काम IDLE में करने वाले हैं वो काम इसमें भी हो जाएगा, बट यही है कि IDLE थोड़ा अच्छा दिखता है, like this is the IDLE and this is the command line, right. तो जो काम हम लोग IDLE में करने वाले हैं अभी, सेम चीज़ इसमें भी होगा. यू कैन ट्राई इट आउट, ओके. और बाकी द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वन वॉज द हेल्प गाइड, ओके. सो दिस इज़ नॉट कुछ काम का नहीं है. और ये डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पे तुम्हें पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में तुम देख सकते हो, ओके. सो हमारे काम का बेसिकली IDLE और ये पाइथन वाला चीज़ है, जो कि पाइथन इफ़ यू वांट यू कैन वर्क इन दिस एज वेल, अगर तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो. बट आई विल बी वर्किंग ऑन दिस IDLE, राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग विथ एनीथिंग एल्स, सो वाई शुड यू लर्न पाइथन क्यों पढ़ना है, देखिए. So let me put some facts in front of you. So in this current situation, Python is the most popular programming language. The most जो भी बड़े companies है, be it Google, Yahoo, Facebook, तो ये सारे companies Python use करते हैं, right? और due to the popularity of this language, nowadays all of the schools are switching to Python. Like as far as I know, the CBSE schools have switched to Python, right? So earlier they used C++ now, but they are using Python. So due to the popularity of the language, all the schools are also using Python. And the another thing is, in the upcoming generation, everything would be automated, right? So in that automated generation, it is good for you if you know to code, because coding is the only way by which you can interact with your PC or your laptop, which would be your best friend in the upcoming future, right? So it doesn't matter to which background we belong. अगर तुम्हें लैपटॉप या पीसी यूज़ करना है तो तुम्हें उससे इंटरेक्ट करना भी आना चाहिए, राइट. एंड कोडिंग इज़ द ओनली वे टू इंटरेक्ट विथ योर पीसी. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वॉचिंग मूवीज और समथिंग लाइक दैट. इफ़ यू need to work with software, then you need to know to code, right? So for that you need to learn to code. And the third thing is, whatever we are doing in this course, so I will recommend you to keep typing with me, right? Like suppose I did print hello world, okay. So I'll recommend you also simultaneously type this. Builds your muscle memory. So जब हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, then you no need to refer to the notes for the syntax. ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, राइट. अगर तुम सेम चीज़ बार बार टाइप करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा, एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो आई वुड रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू टू टाइप अलॉन्ग विथ मी. वॉट एवर वी डू, जस्ट कीप ऑन टाइपिंग. एंड द फोर्थ थिंग इज, whenever you get an error, suppose let's say I did var is equal to 1 and var is equal to 10. I will explain you what I am doing, but for now just I am doing, okay. So I have taken both the same variables, never mind. So I have taken 1, var 3 is equal to var plus var
2. Let's say I've got a error here, yeah, right. So simply क्या करो, तुम्हारा जो भी error आ रहा है उसे कॉपी कर लो and go to Google. Okay, so Google पे जाओ और उस एरर को पेस्ट कर दो, राइट. और तुम एरर पेस्ट कर दोगे और फिर सर्च मार दो, तो सब सर्च करने के बाद तुम्हें एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट मिलेगा, स्टैक ओवरफ्लो. ओके, सो स्टैक ओवरफ्लो क्या है, बेसिकली यहाँ पे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं और दूसरे जिनको उसका आंसर आता है वो लोग अपना आंसर सबमिट कर देते हैं, राइट. तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अब बहुत पॉपुलर हो चुका है, तो तुम जो भी क्वेश्चन पूछोगे तो उसका 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि किसी ने ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछ रखा होगा और उसका सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल होगा. सो लाइक आई सर्च फॉर दिस एरर, तो आई गेस किसी ने पहले ही ये क्वेश्चन पूछ रखा है. सो लेट्स हेड ओवर टू स्टैक ओवरफ्लो. सो एज यू कैन सी, किसी को ये एरर मिला था एंड उसने पूछा था इस एरर को. सो दिस इज द क्वेश्चन, लाइक someone is asking this question and here you can see someone has answered. So what is the answer? You're trying to concatenate a string and an integer. तो तुम्हें straight forward answer मिल जाएगा इसमें. Okay, so this is the power of Stack Overflow. So whenever you get an error, first try to resolve it by yourself by referring to Stack Overflow. अगर तुम्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आता है, then you can refer to other sources, right? So this was a few things which I wanted to share before starting with the course. So now let's proceed with the course. Okay, so this is our IDLE. We will be using this IDLE to play around with our concepts. Like whatever we learn, we will be using this IDLE to execute the code. Okay, so Python जब हम सीखेंगे तो हमारे पास दो चीज़ होंगे, एक हमारा IDLE हो गया और एक हमारा कोड एडिटर हो गया. So this is your code editor. Okay, so दोनों में कुछ differences हैं. IDLE में क्या होता है, like you can only execute one single code at a time. Let's say I write print hello world. Okay, and if I press the enter key, you can see it is printed. तो एक बार में तुम एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हो आइडियली में. ऑन द अदर हैंड, इफ आई गो टू दिस कोड एडिटर, इफ आई राइट प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड इफ आई प्रेस द एंटर की, नथिंग हैपेंस. बेसिकली ये कोड एडिटर में हम लोग पाइथन का पूरा कोड लिखते हैं. ओके, सो दिस कोड एडिटर यूज टू राइट द फुल कोड एंड आइडियली इज जस्ट टू प्ले अराउंड विथ शॉर्ट सिंगल लाइन कोड्स, राइट. तो हम लोग जब कुछ नया सीखेंगे तो हम लोग आइडियली यूज़ करेंगे. ओके, बिकॉज कोड एडिटर में क्या होता है, इफ़ यू राइट अ कोड देन यू हैव टू सेव दैट कोड एंड आफ्टर दैट यू कैन रन इट. ओके, सो ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, तो ये काफ़ी टाइम वेस्ट कर देगा इफ़ वी डू दैट थिंग फॉर स्मॉल कॉन्सेप्ट्स. लाइक अगर हमें कोई वेरिएबल में नंबर असाइन करना है एंड देन अगर हम लोग कोड एडिटर में काम करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा. ओके, सो हम लोग सब कुछ इसी आइडियली पे करेंगे, राइट. सो इट हैज़ सम, इसमें तुम कुछ भी कर सकते हो. लाइक इफ़ यू राइट 2 + 2 इट विल गिव यू 4, राइट. तुम लोग वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हो, वैर इज इक्वल टू 2. सो व्हाट आर वेरिएबल्स? सो बेसिकली वेरिएबल्स तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा या सब जगह होता है वेरिएबल का यूज़. तो वेरिएबल इज सपोज कोई बड़ा सा नंबर है, लेट्स से वैर 1 इज इक्वल टू कोई बड़ा सा नंबर है. ओके, और तुम इस नंबर को तुम बहुत जगह ऐड करना चाहते हो. तो तुम्हारे पास अब दो ऑप्शन है, या तो तुम इस बड़े नंबर को हर जगह इतने बड़े से नंबर को लिख सकते हो, या फिर तुम इस बड़े से नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो और तुम्हें जहाँ भी इस नंबर को यूज़ करना हो तो सिंपली तुम इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, वैर 1. ओके, सो दिस इज वेरिएबल. और दूसरा होता है कॉन्स्टेंट्स. सो कॉन्स्टेंट्स एज द नेम सजेस्ट, कॉन्स्टेंट्स आर सिंपली that are not, which are not variables. So 2, 3, 4, 5, these all are constants, right. So difference क्या है variable और constant में? Let's say I assign any value to a variable, right. So it is very simple. I have assigned 10 to var, right. So if I see the value of the variable, I get 10. On the other hand, if I try to assign any value to a constant, right, let's say I am assigning 5 to a constant 10, then you will get an error, right, because 10 is a constant, it is not a variable, right. So this is the basic difference between a variable and a constant. Okay, so let us see some other things. So I have told you, like here we assigned var, so let's see something new. So I am just in this while playing around with our IDLE, तो हम लोग सबका एक ओवरव्यू देख रहे हैं, ठीक है, ताकि when we learn about it in detail, like here I have used a data type number
तो जब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो तुम्हारे दिमाग में ये ऑलरेडी होगा। सो अगर तुम सेम चीज़ को बार बार दिमाग में बैठाओगे तो तुम्हें कुछ डिफिकल्टी नहीं होगा उसे दिमाग में रिटेन करने में, राइट। सो लेट्स से आई राइट var इज इक्वल टू 15, ओके। सो अभी var में 15 स्टोर्ड है। अगर मैं फिर से लिख दूँ var, ओके अगर मैं फिर से लिख दूँ var इज इक्वल टू 20, सो नाउ क्या होगा कि var में अब var का न्यू वैल्यू अब 20 है, राइट। सो अब var का 15 जो वैल्यू था वो अब ओवरराइट हो चुका है। सो द न्यू वैल्यू ऑफ var इज 20। नाउ इफ आई डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ var, I am getting 20, right? So this is overwritten, okay? So this was a basic concept. Another thing, there is the concept of strings, right? So suppose I write anything in quotes. So now var is storing 20 as a string. It is not a number now, right? So if there is another function which is known as type, okay? सो टाइप सिंपली क्या करता है, तुम्हारे किसी वेरिएबल का डाटा टाइप दे देता है, ओके। सो डाटा टाइप क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डाटा टाइप देखेंगे क्या होता है। अभी के लिए बस समझ लो कि कोई भी वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन करते हैं उन सारे वैल्यूज़ के अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर, स्ट्रिंग, देन ट्यूपल, लिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। सो टाइप क्या करता है, तुम्हारे बस उस वैल्यू का कैटेगरी रिटर्न कर देता है। लेट्स से आई वांट टू नो द टाइप ऑफ var. So as I told you, since 20 is enclosed in double quotes, now it is a string. So I am getting string here, right? अगर मैं फिर से var is equal to 20 लिख दूँ, now if I check the data type using the type function, so if I do it now, you can see I am getting int. Int means integer, right? So अगर तुम कुछ भी quotes में लिखते हो तो वो एक string हो जाता है। So just now I use the word function for type, okay? So function क्या होता है? So we will also deal with function in the upcoming videos. लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लो, like you are writing a program to print hello world, right? You printed hello world using this statement, okay? So this is your program to print hello world. Similarly functions क्या होते हैं? Functions are inbuilt programs which are written, which you cannot see. So simply you are using that program to do something. Like print is also a function. So print का भी कुछ प्रोग्राम कहीं लिखा होगा. Simply you are using that function to print something. तो इस प्रोग्राम print function के प्रोग्राम में लिखा होगा कि if you are getting any value between your brackets, then simply you have to display that value onto the screen. ये print के प्रोग्राम में लिखा होगा. And we are using that program through calling the print function, okay? So functions are basically small programs which you can use in your program. So similarly type is also a function. Then there is one more function, input. This lets you input any value. Let's say if I press the enter key, now it will ask for input. I can give any input, let's say 30. So now 30 is input. So let's say I have a variable named number. Okay, so I now take input. So now whatever input I take, it will be stored in the number variable, okay? So now 45 is stored in number. Now if I display number, you can see I am getting 45, right? Am I clear till now? Right? So one more thing, whatever input you take, okay? So by default, input stores it as a string, right? So here you can see like when we stored var 20 in var, right? और जब मैंने var डिस्प्ले किया तो 20 डायरेक्ट डिस्प्ले हुआ, यहाँ कुछ कोट्स नहीं है, राइट? लेकिन यहाँ पे जब मैंने इनपुट लिया 45 और जब मैंने नंबर में स्टोर किया, लेकिन जब मैंने नंबर डिस्प्ले किया तो 45 कोट्स में आ रहे हैं, राइट? यू कैन सी द डिफरेंस। यहाँ पे कोट्स नहीं आ रहे थे इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे कोट्स आ रहे हैं। सो ये कोट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जब हम इनपुट लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में सेव होते हैं, राइट? सो इफ़ यू सी द टाइप ऑफ नंबर, you can say it is a string, right? So this is string. So there is one more function which is used to convert a string to an integer, right? So before coming to that function, let's see another basic concept. Let's say I have a variable to which I am assigning 5, right? Again I am taking another variable to which I am assigning a string 10.
Okay, so if I take another variable var2 and if I do var plus var1, so what do you think? What would be the output? So you might be thinking, if you are thinking the output would be 15, then you are absolutely wrong, because if I do it now, if I press the enter key, you will get an error. So why is the error? So as I gave you the example here by putting it in Stack Overflow, it simply said that you can't add a string and an integer. You can see here var is an integer because I am not given a quote. However, var1 is a string because 10 is enclosed in quotes. So when I am adding both, they can't be added because one is integer and one is string, right? So इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग किसी एक को एक टाइप में कन्वर्ट कर देंगे. लेट्स से आई एम कन्वर्टिंग 5 टू स्ट्रिंग. So in order to convert that, I will use var is equal to str of var. So what I have done is that I have put the value of var in var itself. So I am doing var is equal to, so this string function converts the original value of var to string. So originally var was 5, which is an integer. So it is this function is converting it into a string, and again it is storing back into var. Okay, so if I press the enter key now, okay, so अभी var जो होगा वो एक string है. You can see 5 is enclosed in quotes, so it is a string now, right? So अगर now if I do var2 is equal to var plus var1, okay, so now the value is stored in var2. Now I don't get an error. So now can you guess what would be the value stored in var2? So we are adding var, which is 5, and var1, which is 10. So I guess you might be guessing that the value stored in var2 would be 15. So if you are thinking that the value stored would be 15, then again you are absolutely wrong, because the value stored is 510. So why so? Why did it happen? Well, the simple reason is that if you use the plus sign with strings, okay, I'm repeating it again, if you use the plus sign with strings, then it simply combines both the strings. Okay, so if I do it as hello plus world, if I press the enter key now, you can see they both have been added. However, if I do 10 plus 5, I am getting 15, right? So this means if I use integer, right, if I am using an integer, then it is the plus sign is simply adding them, right? However, if I am using strings, it simply concatenates them. Concatenates means to combine the string, right? So you can see here they both have been combined. So as a result, since here var and var1 both were strings, so when I added them both, the value of var was 5 as a string and var1 was 10 as a string. So when I combined them both, I got 510 combining them. However, if I need to add them, then I need to convert them into integer, right? So there is another function. So you learned about the string function. Don't worry, I am just giving you an overview. We will go into detail about each function when we deal with it separately, right? So now again another function. Now we need to convert the string back to integer. So var is equal to int, and now put var, because var initially var was a string, right? Now this function will convert into an integer, and the var, it will be stored in var. So when I press the enter key now, and if I display var now, you can see the quotes are gone, because now var is an integer. Similarly, we have to convert var1 also to integer so that we can add them. So we will do var1 is equal to int of var1. Now if I press the enter key, now var1 is an integer. Okay, now again if I do var2 is equal to var plus var1. Now if I do var2, if I see the value of var2, now you can see I have got 15. So I hope I am clear the difference between string and integer, right? And again, I guess you might get a common doubt, like why am I using var again and again? Like here I used var,
So I used var here, I stored 5. So if I'm using var again, then 5 क्यों नहीं स्टोर हो रहा है, इसका यहाँ पे नया वैल्यू कहाँ से आ रहा है? So I gave you the simple example of overwriting, right? Like if I do, like if I write var is equal to 2, and if I display I'll get 2, but if I again do var is equal to 10, and if I display var I'll get 10, right? तो वो वैल्यू ओवरराइट हो जाता है, इसलिए दैट्स वाई आई एम अगेन एंड अगेन यूजिंग वैर, सो दैट इट, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा कन्वेंशन है बाय विच यू नेम वेरिएबल्स, तो इट डजेंट मैटर बिकॉज बार बार मैं असाइन कर रहा हूँ तो वो ओवरराइट हो जा रहा है. ओके, सो इट डजेंट मैटर पहले क्या वैल्यू स्टोर्ड है. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. सो लेट मी चेक what things I have to cover in this video. So in order to multiply, we use the asterisk symbol here, right? We don't use x. X is not used for multiplying, it will give an error. So we use the asterisk symbol for multiplying, and we use the forward slash for dividing, right? And I guess you might be knowing about the BODMAS rule. Okay, so the order of precedence is first we evaluate brackets, then we evaluate multiplication and division, then the addition and subtraction. So let's say there is 6 plus 3 into 2. I'm sorry, is 6 plus 3 into 2. So the result should be 12, right? But if I do 6 plus 3 into 2, I guess the answer would be 18 now, right? So the order of precedence matters. Like for in this case, first brackets are evaluated and then multiplication is evaluated. So this was the simple concept. Okay, so one more concept about strings, a basic concept. Okay, so I have dealt with plus sign which adds two strings. Let's say I have hello, okay, and if I do plus world, so it is just simply adding. So why did I get a space in this? Because हम पहले यहाँ पे space दे चुके थे, right? I had already given a space here, that's why I have got a space here. If I would have done simply hello plus world, now I am not getting a space, right? But if I use a multiplication sign, hello, okay, and then if I use the multiplication sign, it simply repeats that string, right? So I have got 2 times hello hello. Okay, so I hope I am clear. So this was another basic concept. So we also have a len function which simply calculates the length of strings. If I put hello here, if I press enter key, I am getting 5. So since the length of this string is HELLO, which is 5, so I am getting 5. So these were the basic concepts and playing around with the IDE. So I have just gave you the overview of all the concepts, and we will deal with it separately in each video. Okay, so now we will write our first Python program. Okay, so go to file, then new file. So now here we will write a program. What we are planning to do is that our program will simply print hello world. Okay, उसके बाद वो हम लोग से हमारा नाम यूज़र इनपुट मांगेगा. Okay, or after we give them our name, it will simply print hello and then your name. Okay, so this is a very simple program to show you just the use of this code editor. Okay, and we will be gradually increasing our level as we move forward. Okay, so let's first print. I guess you might have guessed how to print hello world. And one more thing, in Python, like if you have used any other language like C++, there we used to give brackets, right? हम लोग brackets के अंदर अपना कोड लिखते थे. Like suppose अगर तुम्हें आइडिया हो तो if we use the if statement and we used a bracket to specify up to which this if statement should be valid, right? To specify the scope of this if statement. लेकिन Python में ऐसा कुछ नहीं होता है. Python में indentation is very important. What do I mean by indentation? Indentation means simply the spacing. Means let's say if I write a if statement here, right? If I get a if statement here, I'm just giving you an introduction. I'm not going into detail. If you don't know about if, doesn't matter. We will cover it in the upcoming videos. But if you have any idea about if, then
we used to write if, we will write if here. We don't give any brackets. So whatever statements are in line with this if statement, they are considered as a part of this statement. Okay, I hope I'm clear. Like we used to give brackets. Now here we will not give brackets. Simply whatever statements are in line with this if statement are simply part of this if. Okay, so suppose if I write here, I will go here and write this. So all these statements are part of this if, but this statement is not part of this if. Okay, so I hope I'm clear. This was a small concept. Okay, so Python has a gives very importance to indentations. So I've written print hello world, then I have to ask for my name, so I'll store it in a variable. We use the input function to ask for user input, then again we'll print hello plus name. So here I have given a space so that when it displays my name, there is a space between hello and my name, right? So I hope it is clear. So now we have to save this. So you can see the procedure is very long to run a Python program, and that's why I prefer to play on ideally rather than going on to the code editor each time. So let's give it a random name, save. So now I can run it simply, run module. So now you can see I've got hello world. Now it is asking for my name. Let's give it. Okay, and once I press the enter key, you can see it is giving hello and the name the young classroom, right? So I hope it is clear, because first it print hello world with this statement, okay, and after this it is asking for input. Here it stored the input in name, and then it has printed hello and the name young classroom, right? So this was our first Python program. I hope you learned something from this video. If you have any doubts, then head over to the comment section or go on to the website. We have made a separate doubt section for this purpose. Go and submit your doubts there, right? I hope I have dealt with each topic. Like we have set up the Python environment. We have been introduced to Ideally. We have written our first Python program, which was a very simple program. However, we will be increasing our level as we proceed, and we will reach to a level at which we can build a tic-tac-toe game, which I showed you in the previous video. Okay, so this was all for this video. Thank you for watching. Meet you in the next video.